So welcome to the students to the new lecture of this laminar flow. तो आज हम इसमें न्यूमेरिकल पार्ट हमारा जो सेशन होगा वो क्या होगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल पार्ट इसमें कुछ करेंगे। पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आपके हैं जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से इसका जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पोर्टेंट से न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज करेंगे। PYQ पार्ट जो है इसका आगे करेंगे, लेकिन आज हम न्यूमेरिकल सेशन इसका करेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो हमने जो लेक्चर्स पीछा दिया था, दैट इज द हैगन-पास्कल लॉ वी हैव ट्राइड इन द लैमिनार फ्लो। व्हेन द लैमिनार फ्लो is in the pipe, उसमें we have tried some certain formula. You understand? तो पहले हम उन फार्मूले के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। कुछ फार्मूले हमने ड्राइव किए थे, some important फार्मूला। तो इसमें देखिए जो आपका shear stress था टाउ at any radius r, जो आपका टाउ एट एनी रेडियस आर था, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? दैट इज टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू r/2, राइट? तो ये फार्मूला था आपका शेयर स्ट्रेस का एट एनी रेडियस आर। सो शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम वेयर शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का क्या होगा? मैक्सिमम सेकंड अगर इसका करें हम, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दैट इज टाउ नाइट। So maximum shear stress is when R is equal to capital R. You understand? As you know that the shear stress is maximum at the ball of the pipe, right? तो जो पाइप की बार है उस पर आपकी shear stress क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये आपका पाइप है एंड suppose this is the diameter, जहाँ से लेके जहाँ तक diameter of the pipe, जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होगा, दिस इज योर कैपिटल आर, राइट? तो शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द बॉल ऑफ द पाइप। तो आप ये फार्मूला आ जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इनटू स्मॉल आर की जगह क्या है? दैट इज कैपिटल R/2। यू अंडरस्टैंड? सो शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। अच्छा, शेयर स्ट्रेस आपकी जीरो कहां पे होगी? वेयर यू कैन से दैट शेयर स्ट्रेस इज जीरो और शेयर स्ट्रेस इज मिनिमम, दैट एट द सेंटर लाइन। एट द सेंटर लाइन शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम आपकी जहां पे होगी जब आपका आर जो है कैपिटल आर के बराबर होगा, उस वक्त आपकी शेयर स्ट्रेस जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। अच्छा, सो मिनिमम शेयर स्ट्रेस, मिनिमम shear stress, minimum shear stress when कहां पे है? सेंटर लाइन के ऊपर। when r is equal to 0, जब आपका r क्या 0 होगा तो उस वक्त शेयर स्ट्रेस क्या होगी? मिनिमम होगी। और अगर इस इक्वेशन में हम r की वैल्यू पुट करें तो शेयर स्ट्रेस इज 0 when radius is r, राइट? ये आप क्या हो गए? शेयर स्ट्रेस के फार्मूला। यू अंडरस्टैंड? राइट डाउन दिस, ये फार्मूले नोट कर लीजिए। अब दूसरे हम वेलोसिटी के फार्मूले लिखते हैं, राइट? सो वेलोसिटी एट एनी रेडियस r इज गिवन बाय, तो वेलोसिटी एट एनी radius
R is given by, तो क्या होगा, U is equal to -1/4 mu into del P upon del X into del P upon del X into R square minus R square. So R square, R means capital R square minus R square. This is the velocity of the liquid passing through the pipe at any radius R. कोई भी रेडियस हम ले लें इसमें, तो पाइप का कोई भी रेडियस हम ले तो उसके ऊपर जो वेलोसिटी एट एनी रेडियस आ रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। आर यू कैन से, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, आर स्क्वायर आप कैपिटल आर कॉमन ले लीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका फार्मूला आ गया वेलोसिटी का एट एनी रेडियस आर। ये आपने याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल से पहले ये आपको फार्मूले आपके याद आने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? अब नाउ यू मैक्सिमम, सो यू मैक्सिमम, व्हाट इज योर यू मैक्सिमम? मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी? सेंटर लाइन पे ऊपर। यू मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू -1/8 mu. U maximum, this is equal to, sorry, -1/4 mu, that is -1/4 mu del P upon del X into R square, right? तो U maximum का फार्मूला क्या है? This is a U maximum, ये आपका आ गया U maximum -1/4 mu del P upon del X into R square। ये आपका फार्मूला आ गया वेलोसिटी का एट एनी रेडियस R। दिस इज एट एनी रेडियस R। अब U maximum we can write it like this also, so U maximum, so you know that U maximum upon U bar, this is equal to 2, right? So U maximum upon 2 bar, this is equal to U, where U maximum is the maximum velocity and U R, this is the average velocity, right? तो U maximum तो आपको पता है, this is the maximum velocity। U maximum क्या है? This is the maximum velocity, and U bar, this is the average velocity or mean velocity, average velocity। You understand? अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखो। एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी है U बार, दिस इज इक्वल टू -1/8 म्यू, दिस इज इक्वल टू -1/8 म्यू del P upon del X into R square। You understand? This is a U bar। U bar का फार्मूला क्या है? माइनस del P into R square। You understand? तो U bar हम we can write down U bar, this is equal to U bar, this is equal to U maximum, U bar is equal to U maximum into 1 minus R square upon
आर स्क्वायर। ये भी फार्मूला याद रखिए। अगर आपको यू मैक्सिमम दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड द यू आर, राइट, सो दिस इज इक्वल टू दिस एट एनी रेडियस आर आपने निकालना है, तो दिस इज द फार्मूला फॉर दिस। अब नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बाई। बाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल। बाई क्या है? ये डिस्टेंस है बॉल से, राइट। सो वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल। वाई इज द डिस्टेंस। बाई क्या है? वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम, y is the distance from the ball. So y को हम देखिए, ये आपका बॉल है, दिस इज योर पाइप है, राइट। तो ये कोई आपका सिलेंड्रिकल फ्लूइड है, दिस इज योर सिलेंड्रिकल फ्लूइड हियर, राइट। तो मैं कहता हूं कि बाई आपका डिस्टेंस क्या होगा? ये अगर बाई जो आपका है दिस इज इक्वल टू आर माइनस आर, राइट। वाई इज इक्वल टू आर माइनस आर। तो इसका जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना है? आर है, और ये डिस्टेंस आपका कितना है? कैपिटल आर है। तो ये जो आपका ये डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड द बाई। सो बाई इज इक्वल टू आर माइनस आर, यू अंडरस्टैंड। तो बाई आपका क्या होगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो ये फार्मूला बाई का भी आपको पता चल गया कि बाई आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब आ जाइए आप प्रेशर ड्रॉप में, राइट। सो प्रेशर ड्रॉप, व्हाट इज द प्रेशर ड्रॉप? दिस इज इक्वल टू 32 mu u bar L upon d square, right? So this is your pressure drop. अगर हम हेड की बात करें, दिस इज इक्वल टू 32 mu u bar L upon rho g d square. You understand? अब now you have the pressure drop. अगर मैं कहूं माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स। दिस कैन बी रिटन एज माइनस, इधर लिखिए P2 माइनस P1 upon x2 minus x1, right? Or therefore del p upon del x, इसको हम लिख सकते हैं P1 minus P2 upon L, because x2 minus x1 this is equal to L। तो ये आपका आ गया प्रेशर ड्रॉप, del p upon del x this। तो ये सारे फार्मूले में जो पाइप के थे फार्मूले, this we have written here, right? All the because before going for the numericals, you must know each and every relation which come across to this topic, so that you can understand it well and you can calculate the numericals properly। तो ये फार्मूले आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल सेशन करने वाले थे। तो इसलिए मैंने इससे पहले आपको ये जितने भी फार्मूले हैं वो आपको हमने फार्मूले दे दिए। यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ कम टू दिस प्रॉब्लम, कम टू दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपको दिया था। अब देखिए, पहले जो गिवन में है, फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज गिवन हियर, राइट। तो ये गिवन है, गिवन हम इस साइड लिख लेते हैं, राइट। So first we will see that what is given in the problem,
एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अब पढ़िए इसे ध्यान से। एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड per meter square, and relative density, that is also given as here, is flowing through a circular pipe of diameter 50 mm and length 300 meters. The rate of flow of fluid through the pipe is this 35.5 लीटर पर सेकंड। ये आपको Q की वैल्यू दिया है, राइट, डिस्चार्ज का वैल्यू दिया है। फाइंड द प्रेशर ड्रॉप, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक तो हमें प्रेशर ड्रॉप फाइंड करना है इन द लेंथ ऑफ 300 मीटर, वी हैव टू फाइंड द प्रेशर ड्रॉप, राइट, एंड आल्सो द शियर स्ट्रेस एट वॉल। और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? शियर स्ट्रेस एट द वॉल। दिस इज योर प्रॉब्लम, आपने पढ़ लिया इसको। नो, फर्स्ट वी विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है? एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस, तो इसका मतलब जो म्यू का वैल्यू है, दिस इज गिवन एज 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड द रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया है 0.9, तो रो क्या होगा इसका पानी का? दिस इज वाटर का, दिस इज 0.9 इंटू 1000। डेंसिटी क्या आ गई? 0.9 into 1000 is flowing through a circular pipe. Pipe is circular, and the diameter of the pipe, this is given as D is equal to 50 mm. इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। So this is equal to 0.05 meter, right? So D is given here. The rate of flow, the rate of flow of the fluid through pipe is this. So discharge is given Q. How much it is given? 3.5 liters per second। हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे क्या करेंगे हम? 3.5 upon 1000, so मीटर क्यूब पर सेकेंड। यू अंडरस्टैंड? 1000 से डिवाइड कीजिए, राइट। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स हैं? दैट इज 1000। सो यू विल गेट द डिस्चार्ज हियर। फाइंड द प्रेशर ड्रॉप, हमें प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करना है। डेल पी अपॉन डेल एक्स वी हैव टू फाइंड आउट, एंड दिस इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन L। ये अभी फार्मूला मैंने लिखा के आपको दिया। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। एक तो हमें प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करना है, and second one we have to find out the shear stress at wall, that is shear stress at wall हम denote करते हैं tau naught के साथ, तो tau naught we have to find out। So this is my problem, what is given here, this I have written, but we have to calculate, that is also written here। अब आ जाइए कि how we will solve it। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। So first we will solve the first part, that is देखिए हमें P1 माइनस P2 हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो P1 माइनस P2 दिस इज इक्वल टू, ये कौन सा फार्मूला था? P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप का 32 म्यू यू बार इंटू एल अपॉन डी स्क्वायर। तो पहले हम ये फार्मूला लिख लें। इसको करने से पहले फर्स्ट वी विल चेक इट वेदर यू आर दिस आपका जो है क्वेश्चन है वेदर इट इज लैमिनार फ्लो और जो कोई दूसरा फ्लो है, कोई भी फ्लो है, तो दैट वी विल सी हियर। राइट, ये हो गया प्रेशर ड्रॉप का। तो फर्स्ट स्टेप इसमें करेंगे, फर्स्ट क्या है? टू चेक
whether the flow is laminar, राइट। तो इसको चेक करने के लिए भी बट हमें रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड रेनॉल्ड नंबर क्या है? आर ई, दिस इज इक्वल टू रो इंटू यू आर इंटू डी आर एल डी अपॉन म्यू, राइट। सो दिस इज द फार्मूला टू चेक द रेनॉल्ड नंबर। यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखिए सारी चीजें हैं बट हमारे पास मीन वेलोसिटी, जहां पे अगर आप गिवन में देखेंगे तो मीन वेलोसिटी हमें कहीं भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मीन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, यू आर। यू आर क्या है? मीन वेलोसिटी। एंड दिस इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। ये किसके बराबर होता है? डिस्चार्ज अपॉन एरिया। डिस्चार्ज आपको दिया है, डिस्चार्ज जहां पे आपको दिया है 3.5 अपॉन 1000, राइट। 3.5 अपॉन 1000। और एरिया क्या होगा? व्हाट इज योर एरिया? दैट इज ये एरिया आ जाएगा π/4 into d square. What is your d? That is 0.05 का स्क्वायर, राइट। तो जहां से आप मीन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, सो हाउ मच द मीन वेलोसिटी इज, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.00354 को आप ऊपर ले जाइए, दिस इज पाई इंटू 0.05 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट इट, इसको ऊपर से घटा देते हैं। So you will get UR, this is equal to दिस इज इक्वल टू यू बार आपका आ गया, दिस इज इक्वल टू 1.782 मीटर पर सेकंड। ये चेक कर लीजिएगा, राइट। तो यू बार की हमारे पास वैल्यू आ गई, ये जहां पे लिख लेते हैं हम। तो यू बार आपने कैलकुलेट कर लिया, that is 1.782 meter per second. And now अब हम रेनॉल्ड नंबर यहां से निकाल लेंगे, राइट। सो हमारा रेनॉल्ड नंबर क्या है? आर ई, दिस इज इक्वल टू रो इंटू यू आर इंटू डी अपॉन म्यू। ये वैल्यू पुट कर लो। सो व्हाट इज रो? दिस इज 900, 0.9 इंटू 1000, 900। यू आर अभी हमने निकाला 1.782 एंड डी दैट इज 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1, राइट। तो जहां से रेनॉल्ड नंबर आप कैलकुलेट कर लो, यू आर दिस
Reynolds number, that is 900 801.9, ऑलमोस्ट 802 कह सकते हैं हम। तो ये आपका आ गया 801.9, ये रिनॉल्ड। सो दिस यू हैव सीन दैट दिस रिनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000। ये आपका जो रिनॉल्ड नंबर आया दैट इज लेस देन 2000, and when the Reynolds number is less than 2000, you can say that it is the laminar flow and you have checked it. So flow is laminar. ये पहला पॉइंट आपने चेक कर लिया, flow is laminar because RE less than 2000. You understand? RE की जो वैल्यू है less than 2000. अब आइए ये प्रेशर जो आपको फाइंड आउट करना है हमने, बिकॉज हमें निकालना है डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू चाहिए हमें। सो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू 32 रो इंटू right. So this is your P1 minus this is equal to 32 mu, this is sorry mu into UR into L upon D square। तो ये आपका आ गया। तो जहां पे सारी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, तो पुट करने के बाद आपका क्या आएगा, P1 माइनस P2 32 0.1, UR you have find out that is 1.782, L this is given as 300 and 0.05 whole square. You understand? So calculate, that is this is equal to 6842. This is equal to 6842, that is 88 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसको आप न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 684288 इंटू 10⁻⁻⁴ into 10⁻⁻⁴ Newton per second, right? So P1 minus P2 की वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड। तो P1 और P2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो ये आपका आ गया P1 minus P2। You understand this? So P1 minus P2,
So one part is over. Up second part we will do it. That is the maximum shear stress. Second part क्या है इसमें? हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम shear stress. That is tau naught. This is equal to tau naught. This is equal to, ये फार्मूला दिया था, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स. और मैक्सिमम shear stress कब होगी? when small r is equal to capital R, that is r by 2, right? So what is your this minus del p upon del x? Del p upon del x. What is the value of this del p upon del x? This is equal to minus p2 minus p1. This is minus p2 minus p1 upon l, right? r. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p1 minus p2 upon l, right? और p1 minus p2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था. हाउ मच इट्स वैल्यू इज, दैट इज p1 minus p2 we have calculated right now. This is 684,288. That is 684,288. ये हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, इसलिए इंटू 10⁻⁻⁴ नहीं कर रहा. और एल कितना है आपका? 300, राइट? एल कितना है? 300. इसको कर लो, कितना है ये? सिक्स एट फोर टू 2280.96. So this is equal to 2280.96 Newton, right? So this is your this minus del p upon del x, del p upon del x. Therefore tau naught पैटिक वैल्यू पुट करो. Therefore tau naught is equal to, इसकी जगह क्या आ जाएगा? That is 2280.96. and what is your r? 0.05 by 2. r is equal to 0.25 divided by 2, right? r क्या होगा? अगर d की वैल्यू क्या है? 0.05, तो ये आएगा 0. right? 0.025. Yes. This is equal to 2280.
This is equal to 28.512 Newton per meter square. This is equal to 28.512 Newton. So this is the maximum shear stress at the wall. You understand? तो ये आपका आ गया. तो ये आपका न्यूमेरिकल जो था पहला, this we have solved. You understand this? सबसे पहले अपना क्या करना है? We have to write down what is given here, and then आपको ये इसके फार्मूले हैं वो सारे टिप्स के ऊपर होने चाहिए. Then we have to see that what is given, but we want to find out. हमें किस तरीके से वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, so that we can apply in the current formula जो आपको दिया है in the given formula. You understand? So this is your first problem which I have taken today. So next problem इसका लिखते हैं. First we will write down the problem. So just see another question. This is the question जो आपका ESC में, that is 2000 में 2000 में ये क्वेश्चन आया था आपका. Just understand it. तो सबसे पहले we will write down, we will just try to understand the question what is there. जो भी आपको क्वेश्चन दिया पहले आप इसको ध्यान से पढ़िएगा. So a pipe of the 20 centimeter diameter, इस पोर्शन में आप क्या करें, इस तरीके से कर लें. इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे. What is given in the problem and what we have to find out. So given, what is given? A pipe of 20 centimeter diameter. So diameter of the pipe is given, that is 20 centimeter. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20/100. So this is 0.2 meter, right? So diameter is 0.2 meter. This is given. Right. A pipe of the 20 centimeter diameter, 30 kilometer length. तो length of the pipe दिया है, length is of the pipe 30 kilometer. So कितने मीटर होगा, 30 into 1000 meter. Length is given. Transport oils from a tanker. टैंकर से ये जो पाइप का आपको पैरामीटर्स दिए हैं, इसके थ्रू हम ऑयल को क्या करके करेंगे, टैंकर से ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द शोर विद द वेलोसिटी ऑफ 0. तो वेलोसिटी u आपको दिया है. सो u इज गिवन एज 0.318 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी इज गिवन. द फ्लो इज लैमिनार. तो they have already given the flow is laminar, so there is no need to check the flow whether the flow is laminar or not. So this is given here. And mu naught, sorry, ये viscosity, that is viscosity is given. Viscosity given है आपकी mu, that is 0.1 Newton second per meter square. So the power required for the flow, हमें, but we have to find out, we have to find out the power. We have to find out the power. You understand? So this is the question which is given here. So power, सबसे पहले देखिए, we will write down the formula for the power. So power is what? Power का क्या फार्मूला है? जो power आपका है, power, this is equal to delta P into Q. Delta P into Q, this is your power. Delta P क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप P1 minus P2 and Q is the discharge. ये आपका पावर है. You understand this? And now you see here, देखिए जो हमें गिवन में दिया है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा P भी निकालना है, Q भी निकालना है. तो Q निकलेगा यहाँ पे, Q क्या होगा आपका, π/4 into d स्क्वायर, π/4 into d स्क्वायर. तो d की वैल्यू दिया है, तो Q वी कैन कैलकुलेट. तो पहले हम सोल्यूशन इसका करेंगे. सोल्यूशन, डेल्टा P, P1 minus P2 क्या है, 32 mu UR
L upon d square, right? This is your delta P and Q क्या हो गया, pi by 4 into d square, right? Q is pi by 4 into d square. Sorry, Q is equal to area into velocity, A into U, right? Area into velocity, that is Q. तो एरिया आपका आ गया जहां पे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्र इंटू यू, राइट? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्र इंटू यू. तो जहां से अगर हम पावर लिखें, पावर दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू क्यू. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. सिंप्लीफाई कर लें पहले. 32 म्यू यू एल upon d square, and what is your q, that is pi by 4 into d square into u, right? d square और d square ये कैंसिल हो गया. 4 8 ये हो गया. तो हमारे पास आ गया पावर इज इक्वल टू 8 म्यू 8 म्यू u and u, that is u square into L into pi, right? यही हमारे पास बचा. पुट कर दीजिए वैल्यू u square, right? 8 म्यू u square L into pi. Put all these values there. Therefore, power 8. What is your mu? Mu, this is given as 0.1. What is your u? That is also given. That is 0.3818 square. L, that is given 30,000 and into pi. Now you solve it and you will get the answer. आप इसे किलोवाट में, क्वेश्चन का जो आंसर है किलोवाट में पूछा, तो इसको 30 में रहने दीजिए, इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज द आंसर इज किलोवाट. जो इसमें जो ऑप्शन दिया है, आंसर इज किलोवाट. तो सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द 7.63 किलोवाट. यू अंडरस्टैंड दैट इज 7.63 kilowatt. Actually, there are 4 options are given here, A, B, C, D. तो मैंने वो 4 options तो नहीं लिखे, and in that 4 option, this option is also given, that is 7.63 kilowatt. So this is the right answer. You understand? You will get the 4 options there. जो आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, तो 4 ऑप्शंस लिखने में तो थोड़ा सा और टाइम होगा. तो यहां पे ही मैं आपको बताया कि किस तरीके से आपको पावर निकालना है. यू अंडरस्टैंड दैट? सो पावर का सबसे पहले पावर का फार्मूला याद रखिए. ये फार्मूला मैंने नहीं दिया था अभी. दैट इज इक्वल टू डेल पी इंटू क्यू. दिस इज इक्वल टू पावर वेयर क्यू इज द डिस्चार्ज एंड डेल्टा पी दिस इज द प्रेशर ड्रॉप. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 3.
So just see one, this is one of the question that is also in the ESC. ये भी क्वेश्चन आपके ESC एग्जाम में था 2001 का. देखिए, laminar flow at an average velocity. So laminar flow at an average velocity of 5 meters per second occurs in a pipe of 10 centimeter radius. So average velocity दिया है, तो average velocity is given, average velocity, that is u bar, this is given, that is 5 meter per second, occurs in a pipe of radius 10 centimeter. तो कैपिटल R रेडियस आपको दिया कितना, 10 सेंटीमीटर. So radius of the pipe, radius of pipe R is given, that is 10 centimeter, right? Find the velocity. We have to find the velocity at 5 centimeter radius. हमें क्या फाइंड आउट करना है, velocity फाइंड आउट करना है. velocity फाइंड आउट करना है at 5 centimeter radius. Means small r की वैल्यू दिया है 5 centimeter. You understand? ये हमें स्मॉल r की वैल्यू दिया 5 centimeter and we have to find the velocity. अब देखिए, मैंने अभी आपको पीछे फार्मूला दिया था, द वेलोसिटी एट एनी रेडियस आर क्या थी, u इज इक्वल टू -1/4 म्यू del p अपॉन del x इंटू आर स्क्र कॉमन ले लो, 1 माइनस आर स्क्र अपॉन आर स्क्र, राइट. सो दिस फार्मूला इज द वेलोसिटी एट एनी रेडियस आर. ये हमने दिया. अच्छा, जो आपका एवरेज वेलोसिटी था, जो आपका एवरेज वेलोसिटी था, उसका भी फार्मूला मैंने आपको दिया है. सो एवरेज वेलोसिटी था आपका -1/8 म्यू del p on del x into r. You understand? अब ये दोनों वेलोसिटीज क्यों लिखी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी रेडियस आर. हमें जहां पे वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी हियर. यू अंडरस्टैंड? मीन वेलोसिटी इज गिवन, एवरेज वेलोसिटी आपको दिया है. अगर इस फार्मूले को मैं एवरेज वेलोसिटी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, यस आई कैन कन्वर्ट दिस फार्मूला. देखिए, यहां पे जैसे ही आपको था u आपको दिया है, u आपको दिया है -1/4 म्यू del p अपॉन del x इंटू आर स्क्वायर दिस, और ये आपका है 1/8 म्यू. अगर मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और 2 के साथ डिवाइड कर लेता हूं, कोई फर्क पड़ा? जाएगा ऐसे? आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. वी कैन राइट इट लाइक दिस. लिख सकते हैं हम, आई हैव जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2. सो कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, दिस पोर्शन, दिस वाला पोर्शन जो आपका जे वाला पोर्शन है, तो जहां पर देखिए जे वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी, यू एवरेज वेलोसिटी. तो मैं इसको, इसकी जगह जे भी तो ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी एट एनी रेडियस, दिस इज 2 into एवरेज वेलोसिटी
1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? हमें ये फार्मूला एक और मिल गया। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी दिया है तो आपने वेलोसिटी एट एनी रेडियस निकालना है। एट एनी रेडियस वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी आपको दिया है तो आप करें 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड दिस? सो यू विल गेट दिस। अब देखिए यहाँ पे सीधी चीजें सारी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। 2 what your u are, this is given here 5, 1 माइनस स्मॉल r क्या है 5 सेंटीमीटर है, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लो 5 बाई 10, यस 5 बाई 100, दिस इज इक्वल टू इसमें सेंटीमीटर में रहने दीजिएगा। यस यस 2 इंटू 5, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएंगे तो ये ऐसे ही रहने दो 5 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? 5 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। सो इफ यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द आंसर। therefore the velocity at any, क्योंकि हमें निकालनी थी वेलोसिटी एट एनी रेडियस आर, तो आर हमारा 5 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी थी। यूज स्मॉल आर की जगह 5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 10 पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जी आपका क्वेश्चन था, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपके प्रोफेशनल्स एग्जाम वगैरह जितने भी हैं, चाहे वो एई का एग्जाम है, जेई का है, गेट का है, ईएससी का है, तो सच टाइप ऑफ पैटर्न इज देयर वेयर यू विल गेट, जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हाउ वी हैव टू अप्लाई द पैरामीटर्स विच आर गिवन इन द कंसर्न फार्मूला, किस तरीके से हमें लगाने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू हियर। So another numerical, that is also the numerical which was asked in ESC exam, that is 2007. So velocity for flow through a pipe measured at the center. देखिए this point we have to remember, velocity कहाँ पे? at the center, found out to be 2 meters per second. So it means जैसे आपको पता है, you must have this concept in mind. So velocity at center क्या होता है? velocity at center, अगर आप velocity distribution की डायग्राम को देखेंगे, this is the parabola and the velocity at the center, that is the maximum velocity. तो जब आपको दिया है कि velocity at the center, so it means the आपको maximum velocity is given. Maximum velocity is given, that is 2 meter per second. Reynolds number is given as RE. He says around 800, say we say it is almost 800. So the laminar flow, the flow is laminar because this is less than 2000. What is the average velocity? हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। देखिए ये एक लाइन का क्वेश्चन है, इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और दूसरा आपके फार्मूलेटिव्स में होने चाहिए, राइट? वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। यू अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले बिफोर गोइंग फॉर द न्यूमेरिकल्स, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, रेशियो ऑफ यू मैक्सिमम अपॉन यू वार, दिस इज इक्वल टू 2। ये मैंने दिया था रेशियो, u maximum upon u bar, this is equal to 2, maximum velocity divided by the average velocity in case of flow through the pipe,
उस वक्त रेशियो क्या होती है, यू मैक्सिमम अपॉन यू आर इज इक्वल टू 2। तो आप कह सकते हैं दैट इज यू मैक्सिमम अपॉन यू बार दिस इज इक्वल टू 2। और देयरफॉर हमें क्या निकालना है, मीन वेलोसिटी तो निकालनी, यू एवरेज वेलोसिटी। तो दिस इज इक्वल टू यू मैक्सिमम upon 2 and u maximum this is given as 2 upon 2 this is equal to 1 meter per second। देखिए ये कितना छोटा सा क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन इज ESC 2008 so answer you understand this u average this is equal to 1 meter per second। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, so another question, so all these questions are the examination questions which I am taking here। this is ESC 2010। just see here, an oil of viscosity 0.5 stoke, इसमें लिख लीजिए इधर, स्टोक में दिया है तो ये आपका आ गया एब्सोल्यूट विस्कोसिटी दैट इज 0.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर क्यूब। यू अंडरस्टैंड, दिस इज न्यूटन, सॉरी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यू अंडरस्टैंड, दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एक ये वैल्यू दिया है इसको। इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डाया, तो डायामीटर ऑफ द पाइप 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में कर लो। यू अंडरस्टैंड, द फ्लो थ्रू पाइप बिकम्स क्रिटिकल एट ए वेलोसिटी ऑफ, कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन देखिए इसमें, ये कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन है द फ्लो थ्रू द पाइप, टू फ्लो थ्रू पाइप बिकम्स क्रिटिकल, जो पाइप के बीच में जो फ्लो होगा वो क्रिटिकल हो जाता है, कब, वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। सो द फ्लो थ्रू द पाइप बिकम्स क्रिटिकल एट ए वेलोसिटी ऑफ, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है एट ए वेलोसिटी ऑफ, मींस में u की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है कि किस वेलोसिटी के ऊपर हमारा फ्लो जो है वो क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये आपका सपोज आपको गिवन था, राइट। अब टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल, हमारा फ्लो जो है वो कब क्रिटिकल होगा, टेल मी व्हेन आवर फ्लो इज क्रिटिकल। हमारा फ्लो क्रिटिकल तब होगा जब हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 2000 होगा, बिकॉज 2000 के नीचे जो आपका फ्लो है दैट इज लैमिनार फ्लो, और 2000 के ऊपर फ्लो आपका क्रिटिकल होना शुरू हो जाएगा, और वो उसके आगे जो है अप टू 4000 तक दैट इज इन द ट्रांजिशन स्टेट। वो किस में होगा, ट्रांजिशन स्टेट के में होगा, एंड देन आफ्टर 4000 यू कैन से द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। यू अंडरस्टैंड दैट। तो हमें फ्लो क्रिटिकल हमें दिया है, फ्लो थ्रू पाइप बिकम्स क्रिटिकल, इसका मतलब जो हमें रेनॉल्ट नंबर है वो उसने दिया है 2000, क्रिटिकल रेनॉल्ट नंबर। यू अंडरस्टैंड, रेनॉल्ट नंबर हमें, क्रिटिकल रेनॉल्ट नंबर हमें क्या दिया है
2000 के ऊपर, राइट। तो आपको पता है रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला इन केस ऑफ दिस, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू U into D, that is absolute viscosity, right? ये आपका रेनॉल्ड नंबर है। अब कंडीशन इज द फ्लो थ्रू द पाइप्स बिकम्स क्रिटिकल। किस वेलोसिटी के ऊपर हमारा फ्लो जो है क्रिटिकल होगा, तो क्रिटिकल का मतलब है अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर आपका जो है कब क्रिटिकल होगा, व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज 2000। तो ये आप भर दीजिए 2000, ये तो U तो हमें निकालना है, D की वैल्यू आपके पास 5 इंटू -2 है, और विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, दिस इज 0.5 to 10⁻⁻⁴. You understand? Therefore, U is equal to 2000 into 0.5 into 5 10⁻², राइट। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एंड सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ U इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या वैल्यू आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमारे फ्लो की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, तो हमारा जो फ्लो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल होगा। ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये एट बी इज द आंसर। यू अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया? क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, जहां पे छुपा हुआ था द फ्लो थ्रू द पाइप बिकम्स क्रिटिकल एट व्हाट वेलोसिटी। तो रेनॉल्ड नंबर के बारे में वी मस्ट नो दैट रेनॉल्ड नंबर इफ इट इज लेस देन 2000 our flow is laminar, and at 2000 it becomes critical, and then above to that there is a transition state from 2000 to 3500 or sometimes 4100। ये जो आपका स्टेज है रेनॉल्ड नंबर का, उस वक्त क्या है फ्लो आपका इन द ट्रांजिशन स्टेट, एंड आफ्टर 4000 जो आपका जब रेनॉल्ड नंबर आपका 4000 या 4000 से ऊपर होगा, योर फ्लो इज टर्बुलेंट। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें ये दिया था, बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ आपको जहां पे ट्विस्ट था द फ्लो थ्रू द पाइप्स बिकम्स क्रिटिकल, और जहां से जो आपको कंडीशन दिया था वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट व्हाट वेलोसिटी द फ्लो इज क्रिटिकल, एंड दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। और देखिए ये क्वेश्चन छोटे से क्वेश्चन है, ये भी आपका ESC 2010 में आपका क्वेश्चन था, राइट। सो नेक्स्ट देखेंगे। So this is the question that is in the gate 1988. The discharge in meter cube per second for laminar flow through a pipe of diameter. So diameter of the pipe is given having center line velocity of this. So center line velocity, you know, this is the maximum velocity. This is given as 1.5 meter per second is. So हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find the discharge. तो जहां पे गिवन लिख लीजिए आप, डायमीटर ऑफ द पाइप दिया है, D दिया है 0.04 मीटर, और सेंट्रल लाइन वेलोसिटी U मैक्सिमम दिस इज गिवन एज 1.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो वी हैव टू फाइंड द डिस्चार्ज। क्यों हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज डिस्चार्ज। राइट, देखिए इसका छोटा सा सॉल्यूशन बनेगा। तो डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज
Q, this is equal to A area into average velocity, right? A into average velocity. तो एवरेज वेलोसिटी हम कहां से निकाल लेंगे? U मैक्सिमम पाइप में हमें रेशियो U maximum upon UR, this is equal to 2, right? Therefore UR, this is equal to U maximum 1.5 upon 2. तो UR आपके पास आ गया 1.5 upon 2. तो अब निकाल लीजिए आप क्या हो, 5/4 एरिया क्या है 5/4, व्हाट इज योर D स्क्वायर, दैट इज 0.04 स्क्वायर, 0.04 स्क्वायर into 1.5 upon 2. Therefore Q is equal to, कैलकुलेट करें, Q is equal to this is 3 pi, this is 3 pi upon 10,000. So Q is equal to 3 pi upon 10,000. You understand? तो ये क्वेश्चन आपका गेट का क्वेश्चन था 1988 में. तो हमारा जो ऑप्शन डी है, दिस इज करेक्ट. So option D is correct here. You understand this? So this is also very important concept जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोफेशनल जितने भी एग्जाम है. At which radius U actual this is equal to U average or U mean. किस रेडियस के ऊपर हमारी जो U एक्चुअल है वो आपका U एवरेज या U मीन के बराबर होगा. तो जैसे आपको पता है U एक्चुअल क्या है, U एक्चुअल दिस इज -1 अपॉन 4 म्यू एज कल माइनस डेल पी ऑन डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर. यूर सो दिस इज योर यू एक्चुअल, राइट. इसको इस फॉर्म में लिख लो आप. R square minus R square, right? This is your U actual. And U mean, या जिसको U average कहते हैं, is equal to 1 upon 8 mu del P upon del X into R square, right? ये तो दोनों फार्मूले पता है. तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट एट विच रेडियस U एक्चुअल दिस इज इक्वल टू U मीन. इसका मतलब हुआ कि U एक्चुअल इज इक्वल टू U मीन. इस रेडियस के ऊपर लिखो 1 अपॉन 4 म्यू डेल P अपॉन डेल X इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, बिकॉज दिस इज द कंडीशन दिया है हमें कि किस रेडियस के ऊपर हमें U एक्चुअल U मीन के बराबर होगा. दिस इज 1 अपॉन 8 म्यू डेल P अपॉन डेल X इंटू आर स्क्वायर. J और J कैंसिल हो गया, राइट. म्यू और म्यू कैंसिल हो गया, 4 से 2, ठीक है. हमारे पास आया दैट एम्प्लॉइज R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर
this is equal to 2, this is equal to r square by 2, राइट? यही मिला हमें। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2, इसको इधर ले जाओ, 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर r, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर is equal to 2r square. Therefore, r square is equal to 2r square r. R is equal to हमें तो ये r निकालना है ना, स्मॉल r. Therefore, r square equal to r square by 2. You understand? तो r किसके बराबर आएगा? r is equal to अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 2. तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर का r आ जाएगा इंटू 1 बाई अंडर रूट 2. यू अंडरस्टैंड? तो r की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाई रूट 2 क्या आता है? 0.707 इंटू r. देयरफॉर इधर लिख ले, r इज इक्वल टू 0.707 इंटू r. जब आपका रेडियस स्मॉल r की वैल्यू 0.707 ऑफ रेडियस होगा, एट दैट टाइम यू कैन से u एक्चुअल velocity, actual velocity, this is equal to the average velocity. You understand? किस रेडियस के ऊपर, यही तो हमें फाइंड आउट करना था. एट विच रेडियस u actual, this is equal to u average. So you can say that when the fluid is or the liquid water is flowing through the pipe and we want to know कि at which radius पाइप के बीच में जो वेलोसिटी होगा, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, वो किस रेडियस के ऊपर, कितने यू कैन से हाउ मच रेडियस के ऊपर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू यू एक्चुअल की यू एवरेज के बराबर होगी. वो किस में होगा? जब रेडियस जो है आपका 0.707 इंटू आर, जो आपका कंप्लीट रेडियस है पाइप का, उसके बराबर जब ये आर की वैल्यू आएगी 0.707 into r, at that time you can say u actual, this is equal to u mean. So this is also very important concept to understand. ये आपको कभी भी कहीं भी आपको किसी भी एग्जाम में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछ सकता है आदमी कि कब आपका u actual, this is equal to u mean, right? So this is equal to when r is equal to 0.70 r. You understand? So at this point, u actual, this is equal to u mean. So today we have taken few problems, not that much because और examination problems बड़ी हैं. अभी parallel plate की problems मैंने I have not taken. तो इसके बाद जो next section होगा इसी चैप्टर के बीच में, तो उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे और कुछ PYQ जो हैं आपके जो गेट में आए हैं, जहाँ ESC एग्जामिनेशंस के हैं, उसमें आपके बड़े यू कैन फाइंड ए वेरी गुड कंसेप्ट देयर आल्सो. वो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1. उसका भी एक कंप्लीट इन पैरेलल प्लेट का और कुछ आपके PYQs लेके एक लेक्चर हम उसका देंगे. यू अंडरस्टैंड? तो आज ये जो आपका फ्लो थ्रू पाइप था, उसके बीच में ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स आज हमने किए हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम करेक्शन फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि करेक्शन फैक्टर क्या है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या है, काइनेटिक करेक्शन फैक्टर क्या है और उसकी डेरिवेशन क्या है, किसके बराबर होता है, उसको भी हम करके बताएंगे. और साथ साथ में जो इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पैरेलल प्लेट के न्यूमेरिकल्स और साथ में
आपके जो PYQ हैं इस चैप्टर के, वो हम कुछ डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज अप टू दिस। सो थैंक यू वेरी मच।